Hello everyone. Today we will solve question number 3 from JEE Main April 2025 Geometric Progression Maths. So let us begin question number 3. If the sum of the second, fourth, sixth terms of a GP of positive terms is 21 and the sum of its 8th, 10th and 12th terms is 15,309, then the sum of its first 9 terms is. So four options given: A 757, B 755, C 750, D 760. So now we have to find out the correct option. So in this question, second, fourth, sixth terms का सम 21 दिया हुआ है एंड 8th, 10th एंड 12th टर्म्स का सम 15,309 दिया हुआ है. So two conditions are given. So we will convert these conditions into two parameters. So with these two equations we can find out the value of these two parameters. Then we can find out the sum of 9 terms. So solution: let the first term be A and the common ratio be R of the GP. Since all terms are positive, A is greater than 0 and R is greater than 0. The general terms of GP is equal to AN is equal to AR to the power n minus 1. ये फॉर्मूला है GP में जनरल टर्म्स को ज्ञात करने के लिए. Now sum of second, fourth and sixth terms, A2 plus A4 plus A6 is equal to 21 given in the question. So now substitute in terms of A and R. So AR plus ARQ plus AR to the power 5 is equal to 21. So this implies पूरे में AR कॉमन है तो AR कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R to the power 4 is equal to 21. This is equation 1. Now second step, sum of 8th, 10th and 12th terms A8 plus A10 plus A12 is equal to 15,309. Now substitute in terms of A and R. So AR to the power 7 plus AR to the power 9 plus AR to the power 11 is equal to 15,309. यहाँ पर AR to the power 7 कॉमन है तो ये कॉमन लिया तो AR to the power 7 in bracket 1 plus R square plus R to the power 4 is equal to 15,309. This is equation 2. So to find out the value, divide equation 2 by equation 1. So A can be eliminated. So AR to the power 7, 1 plus R square plus R to the power 4 upon AR 1 plus R square plus R to the power 4 is equal to 15,309 upon 21. तो ये पूरा ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर से इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी तो हो जाएगा आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729. 21 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 729 इज इक्वल टू, और ये है इक्वल टू 3 टू द पावर 6. And this is the positive terms of the GP. So R is greater than 0. Therefore R is equal to 3. Put R equal to 3 into equation 1. Equation 1 में R equal to 3 हमने put कर दिया तो A into 3 plus A into 3 cube plus A into 3 to the power 5 equal to 21. So ये हो गया 3A प्लस 27A प्लस 243, 3 टू द पावर 5 को हमने
इसकी पावर को खोला तो 243 आया, और यहाँ पर ए है तो 243A इक्वल टू 21। इन सबको ऐड किया तो आया 273A इक्वल टू 21। सो ए इक्वल टू 21 अपॉन 273। 21 से इसको डिवाइड किया तो आया 1/13। नाउ वी विल डू now continue question number 3. Fourth step, calculate the sum of 9 terms. Now we have already find out the value of A and R, first term and common difference, so we can calculate the sum of 9 terms easily. The formula for sum of the first 10 terms of a GP is Sn is equal to A R to the power n minus 1 upon R minus 1. For n is equal to 9, A is equal to 1/13 and R is equal to 3. So S9 is equal to 1/13, 3 to the power 9 minus 1 upon 3 minus 1 is equal to 3 to the power 9। इसको जो पावर को इसको खोला तो हो गया 19,683 माइनस 1 अपॉन ये 13 को नीचे ले गए तो 13 इंटू 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, तो 13 इंटू 2। सो S9 इज इक्वल टू 19,682 अपॉन 26। इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 26 से इसको डिवाइड किया तो आया 757। So the sum of first 9 terms of the given GP is 757. So answer question number 3 option is correct. यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स लिखिए, साथ में यही बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।